connected to 6B77382D. chanting. Bhagava Arahant Samma Sambuddho Sakkhato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantan Sadhammang Sasangham Imehi Sakkare Yatarahan Arupitehi Abhipujayama Bhante Bhagava Suchira Parine Bhutopi Pachima Janatanukampa-manasa Ime Sakkare Dugatapanakarabhute Patiganhatu Amhakam Digaratam Hitaya Sukhaya Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādemi Sakkhato Bhagavata Dhammam Namassāmi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Anandmayam Buddhasya Bhagavato Ubhāgnam Kāram Karunati Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Andmayam Buddhanusatinayam Karomasi Tam Khopana Bhagavantaṃ eva Kalyāno Kiti Saddho Abhuggato Iti Piso Bhagavā Arahant Samma Sambuddho Vijjācarana Sampanno Sugato Lokavidu
anuttaro purisa dhammasarati satta deva manussana buddho bhagavati. Andmayam buddhavigitim karomasi buddhavara antavartadi gunaviyuto suddha vijnana karunai samagatato bodhesiyo sujanatam kamalang vasuro vandamiham tamariyam sirasajinendam buddhoyo sabbhapaninam saranam khemamuttamam pathamanusatittanam vandami tam sirenaham buddhasasmi dasoa buddho me sami kissaro buddhasaham niyademi sariran jivitam chidam vandantoham charisami buddhaseva subodhitam nati me saranam anyam buddho me saranam varam etena satya vajjena vaddeyam sattu sasane buddham me vandamanena ayam punyam pasutam vidha sabbepi antarayami mahesum tasya tejasa kaino acaya vacit savasam teko kamam pakatam buddho patiganatu acyantam tare samvaritum buddhe. Handmayam dhammanusati nayam karomasi swakato bhagavata Dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanaiko paccattam veditabbo vinyohite. Handmayam dhammavigitim karomasi swakatatadi Gunayoga vasena seyo yo magga paka pariyatti vimoka vedo dhammo kuloka patana tadadhari dhari vandamiham tamarin varadhammavitam Yo sabbhapaninam saranam khemamuttamam dutiyanu satittanam vandami tam sirenam dhammasasmi daso dhammo me sami kissaro dhammasaham niyademi sariran jivitam chidam vandantiham charissa dhammasya sudhammatam nati me saranam anyan dhammo me saranam varam itina sajja vajjena vadheyam Satu sasane dhammam me vandamanaya yam punyam pasutam ida sabbepi antarayami mahesu dasati jasa.
handmayam sanghanusati karomasi supatipanno bhagavato savak sangho ujupatipanno bhagavato savak sangho nyayapatipanno bhagavato savak sangho samicipatipanno bhagavato savak sangho yadidam chattari purusayugani atta purus pugala esa bhagavato savak sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyaketam lokasati handmayam sangabhigitim karomasi sadhammajo supatipatti gunadiyuto yo atthavidho ariyapu gala sangha setho siladi dhamma pavara sayakaya cetto vandam aham tamariya naganam susuddham sangho yo sabpaninam saranam khemamuttamam tatyanusati thanam vandamitam sirenam sanghasasmidasiva sangho me samikesaro sanghasam niyadimi sariran jivitanchidam vandantiham charisami sanghaso patipannatam natti me saranam anya sangho me saranam varam etena sajavajena vadheyam sattu sasane sangham me vandamanaya yam punyam pasutam ida sabbi piyantarayami mahesum tasya tejasa आज हम मेत्तानिसंसा सुत्ता का पाठ सुनेंगे। उसको मैंने कल भेजा था सबको।
Mettanisamsa sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavani anatha pindikassa arame. Tatra ko bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti badanteti te bhikkhu bhagavato vacchasosum bhagava etadvoca. Mettaya bhikkhave ceto vimuttiya asevitaya bhavitaya bahulikataya yani kataya vattu kataya anuttitaya paricitaya susamaradhaya ekadasani sansa patikanka katami ekadasa. Sukhang supati sukhang patibujjati na papakang supinang passati manussanang piyoti amanussanang piyoti devata rakkanti nasa aggiva visangva sattangva kamati tuatang cittang samadhiyati mukhavanno vipasidati asammulho kalang karoti uttarim appati vijjanto brahma lokupago hoti. Mettaya bhikkhave ceto vimuttiya asevitaya bhavitaya bahulikataya yani kataya vattu kataya anuttitaya paricitaya susamaradhaya ime ekadasani sansa patikankhati. Idam voca bhagava atmanate bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Etena sacca vajjena sottite hotu sabbada. Etena sacca vajjena sottite hotu sabbada. Etena sacca vajjena sottite hotu sabbada.
now listen to Desana by Ajahn Chah, titled Supports for Meditation. This is the third talk in this collection, and it's entitled here Supports for Meditation, and it was published before in the book Living Dhamma under the simple title Meditation, and it was given at the Hampstead Vihara in London in 1977. So this was originally translated by Bruce Evans, Puriso. Supports for meditation. Seekers of goodness who have gathered here, please listen in peace. Listening to the Dhamma in peace means to listen with a one-pointed mind, paying attention to what you hear and then letting go. Listening to the Dhamma is of great benefit. While listening to the Dhamma, we are encouraged to firmly establish both body and mind in samadhi, because it is a kind of Dhamma practice. In the time of the Buddha, people listened to Dhamma talks intently, with the mind aspiring to real understanding, and some actually realized Dhamma while listening. This place is well suited to meditation practice. Having stayed here a couple of nights, I can see that it is an important place. On the external level, it's already peaceful. All that remains is the internal level, your hearts and minds. So I ask all of you to make an effort to pay attention. Why have you gathered here to practice meditation? It's because your hearts and minds do not understand what should be understood. In other words, you don't truly know how things are, or what is what. You don't know what's wrong and what's right. What it is that brings you suffering and causes you to doubt. So first you have to make yourselves calm. The reason that you have come here to develop calm and restraint is that your hearts and minds are not at ease. Your minds are not calm, not restrained. They are swayed by doubting and agitation. That's why you have come here today and are now listening to the Dhamma. I would like you to concentrate and listen carefully to what I say, and I ask permission to speak frankly because that's how I am. Please understand that even if I do speak in a forceful manner, I'm doing so out of goodwill. I ask your forgiveness if there's anything I say that upsets you, because the customs of Thailand and those of the West are not the same. Actually, speaking a little forcefully can be good because it helps to stir people up who might otherwise be sleepy or drowsy. And it's rather than rousing themselves to hear the Dhamma, allow themselves to drift instead into complacency, and as a result, they never understand anything. Although there may appear to be many ways to practice, really there is only one. As with fruit trees, it's possible to get fruit quickly by planting a cutting, but the tree would not be resilient or long-lasting. Another way is to cultivate a tree right from the seed, which produces a strong and resilient tree. Practice is the same. When I first began to practice, I had problems understanding this. As long as I still didn't know what was what, sitting in meditation was a real chore, even bringing me to tears on occasion. Sometimes I would be aiming too high, other times not high enough, never getting the point of balance. To practice in a way that's peaceful means to place the mind neither too high or too low, but at the point of balance. I can see that it's very confusing for you, coming from different places and having practiced in different ways, with different teachers. Coming to practice here, you must be plagued with all kinds of doubts. One teacher says you must practice one way, another says you should practice another way. You wonder which method to use, unsure of the essence of the practice. The result is confusion. There are so many teachers and so many teachings that nobody knows how to harmonize their practice. As a result, there's a lot of doubt and uncertainty. So, you must try not to think too much. If you do think, then do so with awareness.
But so far your thinking has been done with no awareness. First you must make your mind calm. Where there is knowing, there is no need to think. Awareness will arise in its place, and this will in turn become wisdom, panya. But the ordinary kind of thinking is not wisdom. It's simply the aimless and unaware wandering of the mind, which inevitably results in agitation. This is not wisdom. At this stage, you don't need to think. You've already done a great deal of thinking at home, haven't you? This stirs up the heart. You must establish some awareness. Obsessive thinking can even bring you to tears. Just try it out. Getting lost in some train of thought won't lead you to the truth. It's not wisdom. The Buddha was a very wise person. He'd learned how to stop thinking. In the same way you're practicing here, in order to stop thinking and thereby arrive at peace. So if you are already calm, it's not necessary to think. Wisdom will arise in its place. To meditate, you do not have to think much more than to resolve that right now is the time for training the mind and nothing else. Don't let the mind shoot off to the left or to the right, to the front or behind, above or below. Our only duty right now is to practice mindfulness of the breathing. Fix your attention at the head and move it down through the body to the tips of the feet, and then back up to the crown of the head. Pass your awareness down through the body, observing with wisdom. We do this to gain an initial understanding of the way the body is. Then begin the meditation, noting that at this time your sole duty is to observe the inhalations and exhalations. Don't force the breath to be any longer or shorter than normal. Just allow it to continue easily. Don't put any pressure on the breath. Rather let it flow evenly, letting go with each breath and out. Letting go with each in-breath and out-breath. You must understand that you're letting go as you do this, but there should still be awareness. You must maintain this awareness, allowing the breath to enter and leave comfortably. There's no need to force the breath, just allow it to flow easily and naturally. Maintain the resolve that at this time you have no other duties or responsibilities. Thoughts about what will happen, what you will know or see during the meditation may arise from time to time, but once they arise, just let them cease by themselves. Don't be unduly concerned over them. During the meditation, there is no need to pay attention to sense impressions. Whenever the mind is affected by sense impingement, wherever there is a feeling or sensation in the mind, just let it go. Whether those sensations are good or bad is unimportant. It's not necessary to make anything out of those sensations. Just let them pass away and return your attention to the breath. Maintain the awareness of the breath entering and leaving. Don't create suffering over the breath being too long or too short. Simply observe it without trying to control or suppress it in any way. In other words, don't attach. Allow the breath to continue as it is and the mind will become calm. As you continue, the mind will gradually lay things down and come to rest. The breath becoming lighter and lighter until it becomes so faint that it seems like it's not there at all. Both the body and the mind will feel light and energized. All that will remain will be a one-pointed knowing. You could say that the mind has changed and reached a state of calm. If the mind is agitated, set up mindfulness and inhale deeply till there is no space left to store any air. Then release it all completely until none remains. Follow this with another deep inhalation until you're full, then release the air again. Do this 2 or 3 times, then re-establish concentration. The mind should be calmer. If any more sense impressions cause agitation in the mind, repeat the process on every occasion. Similarly, with walking meditation, if while walking the mind becomes agitated, stop still, calm the mind, re-establish the awareness with the meditation object, and then continue walking. Sitting and walking meditation are in essence the same, differing only in terms of the physical posture used. Sometimes there may be doubt, so you must have sati, to be the one who knows, continually following and examining the agitated mind in whatever form it takes. This is to have sati. Sati watches over and takes care of the mind.
You must maintain this knowing and not be careless or wander astray, no matter what condition the mind takes on. The trick is to have sati taking control and supervising the mind. Once the mind is unified with sati, a new kind of awareness will emerge. The mind that has developed calm is held in check by that calm, just like a chicken held in a coop. The chicken is unable to wander outside, but can still move around within the coop. Its walking to and fro doesn't get it into trouble because it is restrained by the coop. Likewise, the awareness that takes place when the mind has sati and is calm does not cause trouble. None of the thinking or sensations that take place within the calm mind cause harm or disturbance. Some people don't want to experience any thoughts or feelings at all, but this is going too far. Feelings arise within the state of calm. The mind is both experiencing feelings and calm at the same time, without being disturbed. When there is calm like this, there are no harmful consequences. Problems occur when the chicken gets out of the coop. For instance, you may be watching the breath entering and leaving, and then forget yourself, allowing the mind to wander away from the breath, back home, off to the shops, or to any number of different places. Maybe even half an hour passes before you suddenly realize you're supposed to be practicing meditation, and you reprimand yourself for your lack of sati. This is where you have to be really careful, because this is where the chicken gets out of the coop. The mind leaves its base of calm. You must take care to maintain the awareness with sati and try to pull the mind back. Although I use the words pull the mind back, in fact, the mind doesn't really go anywhere. Only the object of awareness has changed. You must make the mind stay right here and now. As long as there is sati, there will be presence of mind. It seems like you are pulling the mind back, but really it hasn't gone anywhere. It's simply changed a little. It seems that the mind goes here and there, but in fact the change occurs right at the one spot. When sati is regained in a flash, you're back with the mind without it having to be brought from anywhere. When there is total knowing, a continuous and unbroken awareness at each and every moment, this is called presence of mind. If your attention drifts from the breath to other places, then the knowing is broken. Whenever there is awareness of the breath, the mind is there. With just the breath and this even and continuous awareness, you have presence of mind. There must be both sati and sampajanya. Sati is recollection, and sampajanya is self-awareness. Right now, you're clearly aware of the breath. This exercise of watching the breath helps sati and sampajanya develop together. They share the work. Having both sati and sampajanya is like having two workers to lift a heavy plank of wood. Suppose there are two people trying to lift some heavy planks, but the weight is so great they have to strain so hard that it's almost unendurable. Then another person, imbued with goodwill, sees them and rushes in to help. In the same way, when there is sati and sampajanya, then panya, wisdom, will arise at the same place to help out. Then all three of them support each other. With panya, there will be an understanding of sense objects. For instance, during the meditation, sense objects are experienced which give rise to feelings and moods. You may start to think of a friend, but then panya should immediately counter with, it doesn't matter, or stop, or forget it. Or if there are thoughts about where you'll go tomorrow, then the response would be, I'm not interested. I don't want to concern myself with such things. Maybe you start thinking about other people. Then you should think, no, I don't want to get involved. Just let go. Or, it's all uncertain and never a sure thing. This is how you should deal with the things in meditation, recognizing them as not sure, and maintaining this kind of awareness. You must give up all the thinking, the inner dialogue and the doubting. Don't get caught up in these things during the meditation. In the end, all that will remain in the mind in its purest form are sati, sampajanya and panya. Whenever these things weaken, doubts will arise. But try to abandon those doubts immediately, leaving only sati, sampajanya and panya. Try to develop sati like this until it can be maintained at all times.
Then you'll understand sati, sampajanya and samadhi thoroughly. Focusing the attention at this point, there will be sati, sampajanya, samadhi and panya together. Whether you're attracted to or repelled by external sense objects, you'll be able to tell yourself, it's not sure. Either way, they're just hindrances to be swept away until the mind is clean. All that should remain is sati, recollection, sampajanya, clear awareness, samadhi, the firm and unwavering mind, and panya, or consummate wisdom. For the time being, I'll just say this much on the subject of meditation. Now, about the tools or aids to meditation practice. There should be metta, goodwill in your heart. In other words, the qualities of generosity, kindness and helpfulness. These should be maintained as the foundation for mental purity. For example, begin doing away with lobha, greed, or selfishness by giving. When people are selfish, they aren't happy. Selfishness leads to a sense of discontent. And yet people tend to be selfish without realizing how it affects them. You can experience this at any time, especially when you're hungry. Suppose you get some apples and you have the opportunity to share them with a friend. You think it over for a while and, sure, the intention is there all right, but you want to give the smaller one. To give the big one would be, well, such a shame. It's hard to think straight. You tell them to go ahead and take one, but then you say, take this one, and give them the smaller apple. This is one form of selfishness that people usually don't notice. Have you ever been like this? You really have to go against the grain to give. Even though you may really only want to give the smaller apple, you must force yourself to give away the bigger one. Of course, once you have given it to your friend, you feel good inside. Training the mind by going against the grain in this way requires self-discipline. You must know how to give and how to give up, not allowing selfishness to stick. Once you learn how to give, if you're still hesitating over which fruit to give, then while you're deliberating, you'll be troubled. And even if you do give the bigger one, there will still be a sense of reluctance. But as soon as you firmly decide to give the bigger one, the matter is over and done with. This is going against the grain in the right way. Doing this, you will win mastery over yourself. If you can't do it, you'll be a victim of yourself and continue to be selfish. All of us have been selfish in the past. This is a defilement which needs to be cut off. In the Pali scriptures, giving is called dana, which means bringing happiness to others. It's one of those conditions which help to cleanse the mind from defilement. Reflect on this and develop it in your own practice. You may think that practicing like this involves hounding yourself, but it doesn't really. Actually, it's hounding, craving, and the defilements. If defilements arise within you, you have to do something to remedy them. Defilements are like a stray cat. If you give it as much food as it wants, it'll always be coming around looking for more food. But if you stop feeding it, after a couple of days, it'll stop coming around. It's the same with the defilements. They won't come to disturb you. It's the same with the defilements. They won't come to disturb you. They'll leave your mind in peace. So rather than being afraid of defilement, make the defilements afraid of you. To make the defilements afraid of you, you must see the Dhamma with your minds. Where does the Dhamma arise? It arises with our knowing and understanding in this way. Everyone is able to know and understand the Dhamma. It's not something that has to be found in books. You don't have to do a lot of study to see it. Just reflect right now and you can see what I'm talking about. Everybody can see it because it exists right within our hearts. Everybody has defilements, don't they? If you're able to see them, you can understand. In the past, you've looked after and pampered your defilements, but now you must know your defilements and not allow them to come and bother you. The next constituent of practice is moral restraint, sila. Sila watches over and nurtures the practice in the same way as parents look after their children. Maintaining moral restraint means not only avoiding harming others,
but also to help and encourage them. At the very least, you should maintain the 5 precepts, which are: firstly, not only not to kill or deliberately harm others, but to spread goodwill towards all beings. Secondly, to be honest, refraining from infringing on the rights of others. In other words, not stealing. Thirdly, knowing moderation in sexual relations. In the household life, there exists a family structure based around husband and wife. Know who your husband or wife is. Know moderation. Know the proper bounds of sexual activity. Some people don't know the limits. One husband or wife isn't enough. They have to have a second or a third. The way I see it, you can't consume even one partner completely, so to have 2 or 3 is just plain indulgence. You must try to cleanse the mind and train it to know moderation. Knowing moderation is true purity. Without it, there are no limits to your behavior. When eating delicious food, don't dwell too much on how it tastes. Think of your stomach and consider how much is appropriate to its needs. If you eat too much, you get trouble, so you must know moderation. Fourthly, to be honest in speech. This is also a tool for eradicating defilements. You must be honest and straight, truthful and upright. Fifthly, to refrain from taking intoxicants. You must know restraint and preferably give these things up altogether. People are already intoxicated enough for their families, relatives and friends, material possessions, wealth and all the rest of it. That's quite enough already without making things worse by taking intoxicants as well. These things just create darkness in the mind. Those who take large amounts should try to gradually cut down and eventually give it up altogether. Maybe I should ask your forgiveness by my speaking in this way. But my speaking in this way is out of a concern for your benefit, so that you can understand that which is good. You need to know what is what. What are the things that are oppressing you in your everyday lives? What are the actions which cause this oppression? Good actions bring good results, and bad actions bring bad results. These are the causes. Once moral restraint is pure, there will be a sense of honesty and kindness towards others. This will bring about contentment and freedom from worries and remorse. Remorse resulting from aggressive and hurtful behavior will not be there. This is a form of happiness. It's almost like a heavenly state. There is comfort. You eat and sleep in comfort, with the happiness arising from moral restraint. This is the result. Maintaining moral restraint is the cause. This is the principle of Dhamma practice. Refraining from bad actions so that goodness can arise. If moral restraint is maintained in this way, evil will disappear and good will arise in its place. This is the result of right practice. But this isn't the end of the story. Once people have attained some happiness, they tend to be heedless and not go any further in the practice. They get stuck on happiness. They don't want to progress any further. They prefer the happiness of heaven. It's comfortable, but there's no real understanding. You must keep reflecting to avoid being deluded. Reflect again and again on the disadvantages of this happiness. It's transient. It doesn't last forever. Soon you're separated from it. It's not a sure thing. Once happiness disappears, then suffering arises in its place, and then the tears come again. Even heavenly beings end up crying and suffering. So the Lord Buddha taught us to reflect on the disadvantages of happiness, that there exists an unsatisfactory side to it. Usually, when this kind of happiness is experienced, there's no real understanding of it. The peace that is truly certain and lasting is covered over by this deceptive happiness. This happiness is not a certain or permanent kind of peace, but rather a form of defilement, a refined form of defilement to which we attach. Everybody likes to be happy. Happiness arises because of our liking for something. As soon as that liking changes to dislike, suffering arises. We must reflect on this happiness and see its uncertainty and limitation. Once things change, suffering arises. This suffering is also uncertain. Don't think that it's fixed or absolute. This kind of reflection is called adinavakata,
the reflection on the inadequacy and limitation of the conditioned world. This means to reflect on happiness rather than accepting it at face value. Seeing that it is uncertain, you shouldn't cling fast to it. You should take hold of it, but then let it go, seeing both the benefit and the harm of happiness. To meditate skillfully, you have to see the disadvantages inherent within happiness. Reflect in this way. When happiness arises, contemplate it thoroughly until the disadvantages become apparent. When you see that things are imperfect, dukkha, your heart will come to understand the nekammakata, the reflection on renunciation. The mind will become disinterested and seek for a way out. Disinterest comes from having seen the way forms really are, the way tastes really are, the way love and hatred really are. By disinterest, we mean that there is no longer the desire to cling to or attach to things. There's a withdrawal from clinging to a point where you can abide comfortably, observing with an equanimity that is free of attachment. This is the peace that arises from the practice. And this is the 34th आज के टॉक का हिंदी अनुवाद करते हैं। उसका शीर्षक था सपोर्ट्स ऑफ मेडिटेशन, साधना के लिए क्या सहायक चीज़ें रहती हैं। तो शुरू में अजान चाह ने ये टॉक जो है जब अमरावती मोनास्ट्री नहीं बनी थी उससे पहले की है, तो हेमल हेम्स्टेड में जो जहाँ वो रहते थे तो उसमें दी थी टॉक। तो शुरू में उन्होंने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बातें कहीं कुछ कि धम्मा को जो है एकाग्रचित से सुनना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, और धम्मा सुनना भी एक तरह की समाधि का अभ्यास होना चाहिए। एक साधना उस तरह से हो ताकि मन हिले फिर वापस ले आए, हिले फिर वापस ले आए। तो उदाहरण दिया कि भगवान बुद्ध की जब प्रवचन होते थे, कई लोग तो धम्मा प्रवचन सुनते सुनते ही मुक्त हो जाते थे, रियलाइज़ कर लेते थे सत्य को। वो इसीलिए क्योंकि वो पूरे तन्मयता से सुनते थे और उसको समझते थे। तो उन्होंने कहा कि धर्म के स्थान पे शांति होना आवश्यक है। तो ये जो स्थान है ये अच्छा है, यहाँ पे बाहर तरफ से तो शांति, बाह्य शांति तो है ही। अब आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अंतर शांति भी आए। तो आपको मन में इस समय शांति क्यों नहीं है, परेशानी क्यों है? क्योंकि आप सत्य की जैसा है उसको जानते नहीं हैं। अच्छे बुरे का सचमुच में फ़र्क नहीं मालूम, दुख का कारण नहीं मालूम। तो उसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। तो पहला चरण साधना का है शांति, ट्रैंक्विलिटी, समता, समर्थ ध्यान का, ताकि चित्त शांत हो। क्योंकि इस समय चित्त जो है विचारों में, आशंकाओं में डूबा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला हूँ, तो यहाँ की कल्चर में शायद ऐसा अच्छा ना हो, तो मैं पहले से ही एडवांस में आपसे क्षमा मांग लेता हूँ अगर आपको बुरा लगे। मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप उसको जो धर्म की अच्छी बात है उसको समझें, और आप आलस्य से ना सुने, आप जागृत हो जाएं और तब सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। बताया कि जो साधना है वो एक पेड़ के समान है। जैसे एक पेड़ को हम ग्राफ्टिंग से बनाते हैं तो वो बड़ा कच्चा ही रहता है, लेकिन बीज से बनाएंगे तो बड़ा स्ट्रांग होगा। तो इसी तरह से साधना भी रूट से करेंगे तो अच्छी बात होगी। अगर हमें यही नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, तो कुछ यंत्रवत करेंगे तो लाभ नहीं होगा। मन को जाना बहुत ऊंचा आदर्श रखना चाहिए, ना नीचे रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, कईयों ने बहुत सारे टीचर्स के साथ साधना की है, तो हो सकता है आप में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उन सबको हार्मोनाइज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब इस मार्ग पे आ रहे हैं तो ज़्यादा सोचिए नहीं, जो कुछ भी करना है, अगर सोचना भी है तो अवेयरनेस के साथ सोचिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मन को शांत करिए, और तभी सती ठीक से जाग पाएगी और उससे प्रज्ञा जागेगी। अधिक सोचने से
मन बेचैन होने लगता है, यहाँ तक कि रोना आ जाता है। भगवान बुद्ध जो बड़े समझदार थे, उन्होंने सीखा किस तरह से कि मन को जो प्रपंच है चलते हैं उनको रोका जा सके, मन शांत किया जा सके। तो साधना में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे शांति के लिए अगर हम आनापान करें, सांस जा रहा है आ रहा है उसकी जानकारी करनी है सिर्फ, कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। और उन्होंने कहा कि एक्चुअली कहा था बाद में कि शुरुआत अगर चाहें तो आप बॉडी स्कैन से करके शरीर को भी शांत कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं, और फिर आनापान शुरू कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी सती जागरूकता बनी रहे और बाकी सब काम नेचुरली जैसे हो रहे हैं होने दें, और उनको जानकारी अपने आप बनती रहेगी। इस समय बैठ के साधना करते समय अपने और चीज़ों के बारे में, मेरे क्या ड्यूटीज़ हैं, कल क्या करना है, कल क्या किया, ये सब चीज़ें ना सोचें। तो अगर आएंगे भी तो उसको नोट करके जाने दें, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। कोई भी शरीर पे कोई और वेदना होती है, कोई सेंस इंप्रेशन आता है, उसको भी जाने दें, उसको महत्व न दें, क्योंकि उद्देश्य हमारा एकाग्रता का है। जो भी शरीर पे इम्प्रेशन, इंद्रियों पे इम्प्रेशन आ रहा है उसके साथ अटैच मत हो, उसको जाने दें। तो धीरे धीरे चित्त से हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मन भी हल्का हो जाएगा। और कई बार लगता है कि चित्त के सांस शायद रुक ही गया हो, लेकिन ऐसे उसमें डरने की बात नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रही है तो बहुत 2-3 गहरे गहरे सांस लीजिए, और इसको एक गहरा सांस लीजिए, फिर धीरे से उसको छोड़िए, और ये 2-3 बार करिए, तो इससे सती प्रतिष्ठित हो जाएगी, एजिटेशन कम हो जाएगी। जब कभी एजिटेशन हो इसको फिर रिपीट कर लीजिए। तो इस प्रकार से निरंतरता से सजगता बनाए रखिए। इसी तरह वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी जैसे लगे मन बहुत भटक रहा है, रुक जाइए, मन को शांत करिए, फिर चालू करिए चलना। सारा अभ्यास हमको वी शुड बी द वन हु नोज, जो जानने वाला है, जो जानने की क्षमता है, उसकी तरफ हम ध्यान अब रहे हमारा, कि हम जान रहे, जाना जा रहा है, बस उसका ध्यान रहे। मन में अंदर क्या है, किसी भी तरह के विचार हो, किसी भी कंडीशन हो, बस उसको जानना है। तो उदाहरण दिया कि मन को एकाग्रता करने के लिए क्या तरीका है कि उसको एक छोटे से डोमेन में रोक के रखें। जैसे एक मुर्गी को रखा जाता है एक पिंजरे में, तो छोटा सा पिंजरा होता है, उसमें खुला छोड़ते हैं तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकती है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह एकाग्रता भी इसी तरह से अपने आलम्बन पे मन को टिका के ज़्यादा इधर उधर जाना, घूमने नहीं देते उसको। और अगर मन साधना करते करते प्रपंच में चला गया, विचार एक के बाद एक कह दे, तो उसी तरह हुआ जैसे कि एक मुर्गी जो है अपने पिंजरे से बाहर निकल के भाग रही है, तो फिर उसको लाना मुश्किल है। तो हम कहते हैं वैसे सती है, सजगता जागती है, तो फिर मन भटकता है तो उसको वापस ले आते हैं। तो ये कहने की बात है कि मन को वापस ले आते हैं, वो कहीं जाता नहीं है, सिर्फ उसका आलम्बन बदलता है, और जैसे ही हम इंटेंशन बदलते हैं तो वो फिर वापस अपने आप आ जाता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी सती निरंतरता से बनी रहे, और सती संपजन्य साथ साथ चले, क्या कि संपूर्ण जानकारी हो क्या कुछ हो रहा है। ये उदाहरण उन्होंने दिया कि मान लीजिए जैसे 2 लोग हैं, एक बहुत भारी लट्ठा उठा रहे हैं, लकड़ी का या सीमेंट का, नहीं उठ रहा, तो एक और आदमी जो जा रहा है वो देखता है चलो उनकी मदद कर दो, तो वो उठा पाते हैं। तो इसी तरह से यदि सती संपजन अपना काम ठीक से कर रहे हो तो प्रज्ञा भी जागती है उसके साथ, और हमारी साधना और पुष्ट होती है। तो फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए कि आपने कोई सोचना शुरू किया कि विचार कोई आया तो प्रज्ञा जागती है कि क्या ज़रूरी है विचार, नहीं तो छोड़ दो, त्याग कर दो। तो इस तरह से हर जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है उसके ऊपर प्रज्ञा अपना काम करके हमें बता देती है, और उनको त्याग करने में मदद हो जाती है। हर अनुभव पे ये बात भी साथ साथ रहे कि अनित्य है, श्योर नहीं है, बदलता रहता है।
फिर उन्होंने कहा अच्छा साधना के लिए तो इतना काफ़ी है, अब उसके सहायक क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि मैत्री भावना बहुत सहायक है, क्योंकि हम में दया का भाव रहे, दूसरों की मदद करने का भाव रहे और जनरॉसिटी का भाव रहे तो बहुत अच्छी मन की स्थिति होती है। और अगर हम एक सेल्फिश रहते हैं, आत्म केंद्रित रहते हैं, तो हमेशा ही डिसकंटेंटेड रहेंगे, संतोष कभी नहीं मिलेगा और मन बेचैन ही रहता है। तो मैत्री भावना से हमारा लोभ कम होता है, दान देने से लोभ कम होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया किस तरह से दान की बात समझाने के लिए कि मान लीजिए आप बहुत भूखे हुए हैं कहीं जाएं और आपके पास 2 सेब पड़े हैं, आपका मित्र भी साथ में है, तो आप मित्र से कहते हैं कि आप भी खाइए, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो मैं खुद ही दे दूं। तो आपको भूख लगी है तो आप देखेंगे 2 सेब है तो उसमें छोटा उसको उनको दे देंगे सामान्यतः। क्यों? ये भी एक तरह की सूक्ष्म लेवल पे सेल्फिशनेस है। तो हमको जैसे ही सजग हो कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को हमारे जो सामान्य व्यवहार है उससे बदल के उसको दूसरे को बड़ा एप्पल देंगे। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बाद में प्रसन्नता होगी कि मैं अपने मन की बातों में छलावा में नहीं आया। तो साधना का सारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी मन की स्वाभाविक सो कॉल्ड स्वाभाविक आदतें पड़ी हुई हैं उनके विपरीत जाके मन को संयमित करना है। जो आत्म केंद्रीय स्वभाव है, जो सेल्फिशनेस है, वो बहुत भारी डिफाइलमेंट है हमारा और उसको काटने की बहुत आवश्यकता है विभिन्न तरीके से। दान एक तरीका है जैसे उसका, क्योंकि उससे लोभ कम होता है और लोभ से जो है मैं और मेरे को ये चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए, वो भाव कम होता है। कईयों को लगता है कि अगर हम दान ज़्यादा करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपकी क्रेविंग को कम करेगा जिससे बहुत प्रसन्नता मिलेगी। जो हमारी डिफाइलमेंट्स हैं, जो विकार हैं, वो एक इस तरह के हैं जैसे एक स्ट्रे कैट घर पे आती है कभी। तो अगर स्ट्रे कैट घर पे आ रही है और आप उसको रोज़ खाना देंगे तो वो रोज़ ही आएगी, तो उसको खाना देना बंद कर दीजिए, वो नहीं आएगी। तो इसी तरह से डिफाइलमेंट जो हैं आ रहे हैं तो उनको भोजन मत दीजिए, उनसे उलझिए मत, ना ही उनको अटैच होइए, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। भूतकाल में हमने अपनी डिफाइलमेंट्स को बहुत पैम्पर किया है, तो उनकी हर बात मानते हैं। ये लोभ जागा तो उसके लिए दौड़ लिए, द्वेष जागा तो उसके लिए अनुसार व्यवहार कर लिया। अब हमको उन विकारों का त्याग करना चाहिए। अपने जो विकार के कारण जो प्रेरणा जागती है उसके विपरीत जाके काम करना चाहिए। फिर एक और बात जो महत्वपूर्ण ने कहा वह है शील का पालन। शील जो है उसी तरह से हमारा पालन करता है जैसे माता पिता छोटे बच्चे को ध्यान रखते हैं। और फिर 5 प्रिसेप्ट्स की 5 शीलों की बात उन्होंने कही कि किस तरह से हमें प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हत्या ही नहीं, उनके प्रति मैत्री का व्यवहार करना चाहिए, उनको कष्ट नहीं पहुंचाएं। तो पहला पर दूसरा है कि कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई चीज़ जो हमारी है दूसरे की है वो नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा ये। और तीसरी बात है व्यभिचार की, तो व्यभिचार नहीं करेंगे। और उसको साथ उन्होंने मॉडरेशन की बात की कि हर चीज़ में मॉडरेशन करेंगे। तो भोजन के अंदर भी मॉडरेशन करना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका वो महत्व समझाया उन्होंने कि ज़्यादा अगर हम टेस्ट के पीछे लगे रहेंगे तो मन हमेशा उसी चक्रव्यूह में घूमता रहेगा। और सत्य का महत्व समझाया बहुत कि हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए। चौथा शील है मूसावादा वाला, वाणी हमारी शील होनी चाहिए और समझ स्पष्ट होनी चाहिए, जैसा हम जो क्रिकेट ना हो, अपराइट हो। फिर 5वां शील नशे पते का होने का, लोग वैसे ही अपने पद से, पैसे के कारण, पद के कारण, अपने शरीर की सुंदरता के कारण वैसे ही नशे में रहते हैं। तो और वह नशे की क्या ज़रूरत है, और में परेशानी होंगे, क्योंकि नशे से हमारी सजगता ख़त्म होती है तो बहुत नाना प्रकार के दुख देती है। तो उन्होंने कहा कि आपको शायद इसलिए आपको उन्होंने उद्देश्य स्पष्ट कहा कि अल्कोहल अगर पीते हैं तो उसको छोड़ना चाहिए धीरे धीरे कम करके। तो फिर उन्हें ख्याल आया कि वो इंग्लैंड में हैं, तो उन्होंने कहा कि
इस तरह से सोच शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके भले के लिए है, क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई समझनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम सत्य और रहीम वचन करेंगे तो कभी भी कोई मन में क्षोभ नहीं होगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा। वो अलग तरह की सुख है जो कि इंद्रिय सुख से बहुत बड़ा है। इस तरह शील का पालन करने से जो सुख आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इसलिए जो अकुशल कर्म है उनको करने से बचना चाहिए, ताकि हमारी शुद्ध चित्त की चेतनाएं जो हैं, जो कुशल धम्म हैं, वो हमें जाग पाए। जो इंद्रिय सुख है उसमें चिपकने की जरूरत नहीं चाहिए कि सामान्यतः लोग उसी में अटके रहते हैं, किस तरह से इंद्रिय सुख को बढ़ाया जाए। उसको हमको ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंद्रिय सुख की क्या कमियां हैं, उसमें क्या कम, किस तरह से वो अनित्य है, बदल जाता है, किस तरह से उसका एडिक्शन हो सकता है। और मनुष्य तो क्या, देवता लोग भी इंद्रिय सुख के चक्कर में रोने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जो इंद्रिय सुख है उसकी जो छलावा है उसको समझना चाहिए, उसके नित्य और अनिश्चित स्वभाव को समझना चाहिए। और सचमुच में ये मानना चाहिए कि एक तरह का डिफाइलमेंट ही है जो लोभ है, क्योंकि इंद्रिय सुख से लोभ जागृत होता है, तो एक डिफाइलमेंट है जिसको हमें दूर रह करना चाहिए। तो इस सारी बात को निकाय आदि नव कथा कहा जाता है, अर्थात जो डेंजर्स हैं इस इंद्रिय सुख के उनको ठीक से समझना चाहिए, और वो स्किलफुली ध्यान करने के लिए आवश्यक है ये भी। और दूसरी बात मैंने कही आदि नव कथा के बाद निखम्म कथा, तो निष्क्रमण की बात, कि किस तरह से हमारी जब सब यथाभूत ज्ञान दर्शन करते हैं, चीज़ें ऐसी जैसी हैं तो समझ में आती हैं, अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्मबोध समझ में आता है, तो निब्बिदा जागती है, निर्वेद जागता है, डिसएंचेंटमेंट जागता है, तो फिर वो हमको आगे शांति की ओर ले जाता है। तो बस यहीं पे उन्होंने फिर समाप्त कर दिया था। थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, फिर संघानुसति का अभ्यास कर लेंगे।
फिर संघानुसति का अभ्यास करते हैं। कई बार हम कर चुके हैं तो जानते हैं कैसे करना है। सिर्फ मैं संघ वंदना को चैंट करता हूँ धीरे धीरे। हमारा सौभाग्य रहा है कि हम उच्च कोटि के भिक्षुओं से मिले हैं, तो उनको याद करके उनके गुणों को देख के भी इस वंदना के साथ जोड़ सकते हैं, उनके चित्र को मन में ला सकते हैं, उनके प्रति आदर की भाव, कृतज्ञता का भाव। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला येषु भगवतो सावक संघो। हमारा सौभाग्य रहा कि इतने वर्षों में ऐसे महापुरुषों से भी मिले जिनके बारे में कहा जा सकता है कॉन्फिडेंटली कि आर्य संघ है वो। जिनको देख के, जिनके व्यवहार को देख के, उनकी विद्या और आचरण को देख के प्रेरणा जागती है, श्रद्धा जागती है। आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करणीय। उनका आतिथ्य करने का भी हमारा सबका सौभाग्य रहा।
कुछ को अपने घरों पे भी लेके बुलाया हमने, उन्होंने ऐसे अवसर दिया हमें। उपयुक्त गिफ्ट देने का अवसर मिला, भोजन दान का, जीवर दान का, वस्तुओं के, अन्य आवश्यक वस्तुओं के दान का, दवाई के दान का। और हम आशा कर रहे हैं कि निवास के दान का भी मौका मिलेगा, हम यहाँ मोनेस्ट्री बना पाएंगे। तो ये प्रेरणा, ये धम्म छंद अपने मन में जगा के रखते हैं। क्योंकि उनके प्रति किया गया कोई भी पुण्य का काम बहुत फलदायक है, बहुत प्रसन्नता देता है तुरंत। तो इसीलिए कहा गया अनुत्तरं पुण्य खेतं लोक साधे। जो और चैंटिंग करते हैं उनमें और संघ के गुण स्पष्ट होते हैं। जैसे रतन सुत्त में आता है, यथिंद खीलो पथविंसितोसिया चतुर्विवाते ही असंपकंपियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चान वेच्च पश्यति इदम्पि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। तो संग में ये उत्तम रत्न है कि उनका चित्त कंपायमान नहीं होता। जैसे कि एक खंबा शहर के एंट्रेंस पे लगा होता है और वो चारों तरफ से कैसे भी हवा आ जाए उससे हिलता नहीं है। यही उपमा संग की दी जाती है, जो आर्य सत्य को निरंतरता से देखते हैं। तो ये भी संग का गुण बड़े विस्तार से भगवान ने समझाया। और गुण आता है शीलादि धम्म पराशय आसाय चित्तो। तो शीलादि गुणों से, धर्म के गुणों से जिनका चित्त परिपूर्ण है, शील विशुद्धि है, तो हमने देखा है इतने दिनों तक कईयों के साथ रहे हैं, थाईलैंड भी गए हैं, धम्म विनय का कितनी निष्ठा से सब लोग पालन करते हैं। 226 नियम सबका पालन करते हैं। तो थोड़ी देर शांत रह के उनका ध्यान करके अपने मन में इन गुणों को फिर से दोहराते हैं।
ताकि हमें मन में श्रद्धा जागे, प्रेरणा जागे, हम भी अब भगवान के श्रावक संगी हैं, हम उपासक उपासिका हैं, वे भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, तो हमें भी ये सब गुण आ सकते हैं, आने चाहिए। तो उनको देख के प्रेरणा जागती है, हम भी अपना धर्म संवेग जगाते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला, येषु भगवतो सावक संघो, आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो, अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि।